Yes. Item number 22, Tata Motors Finance Limited. The judgment is supposed to be present in the court. Yes. It's present, my lord. Ask it. May my My lord. lord, but award data number 1 has already been cross-examined before Justice No, no. comments in your lordship. I have not concluded. Yes. No, our data number 1 was examined in part. Yes, in part. I My will. lord, he is present, my Ask him to come. आपका नाम बताइए। हिफ्जुर रहमान, AFZUR, हिफ्जुर रहमान। HAFZUR। हफ्सूर 22 हफ्सूर रहमान। which এটা কোনটা বাবার My lord, can it be handed over the deposition recorded on 8th September Yes, sure. 2017? Sure. But would be able to, read? I don't know. Huh? Maybe handed over. I don't have it. My lord, I need to also refer to certain answers. 8th Whatever. September 2017. 17. Deposition. Mr. Rahman, can you recollect that you have deposed before this honorable court that after taking finance and after taking delivery of the financed asset, you have given it to your father? क्या आपको याद है कि आपको फाइनेंस मिलने के बाद और आपको वो जो चीज आपने लिया था उसका डिलीवरी मिलने के बाद आपने वो चीज को अपने पिताजी को दिया था? याद है? वो माइक में बोलिए। माइक में बोल। गाड़ी जो है मिलने के बाद वो मेरे फादर के दोस्त जो है वो देखभाल करते थे। उसका नाम कुरैश खान था। After I received the vehicle, it had been looked after. The vehicle was looked after by my father's friend. क्या नाम बोले? कुरैश खान। कुरैश खान। खान। Please look into the question number 5 put to you on 8th September 2017 and your answer to the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि जब वो गाड़ी आपके कस्टडी में था, आपके पास था, जब एक्सीडेंट हुआ था वो आपके पास था कि नहीं? जब एक्सीडेंट हुआ हाँ, था हाँ, तो उस आपने टाइम बताया না था। পুরোটা বলুন আপনি। Answer. কি করছেন? हाँ, तो आंसर में And over आपने my copy to you. आंसर में Yes, बताया please था, do that. Because I have to refer to several Bad interpretation. questions. Yes. आपने बताया I था will कि नहीं require this file. मेरे पिताजी उस Question number 5 गाड़ी and का answer. देखभाल करते थे। हाँ। पिताजी और फ्रेंड आप पिताजी सुनिए, आप पहले सुनिए कि क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि पिछली बार जो क्वेश्चन किया था आपको, तो आपको पूछा गया था कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब आपके पास वो गाड़ी थे कि नहीं, तो आपने बोला था कि नहीं, मेरे पिताजी वो देखभाल करते थे उसको। आपको याद है ये? मेरे पिताजी और फ्रेंड वो This देखभाल answer आप you ये have answered. जो Ask. पूछा जा रहा है वही बोलिए। ये पिछले बार क्वेश्चन किया था, आप ये आंसर दिया, ये आपको याद है? याद है कि नहीं वो बोल रहा। हाँ हाँ या ना? हाँ यस आई रिमेम्बर। पुट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिट द
Mr. Rahman, I call upon you to read all the answers you have given. This is very vague. No, I no, cannot I- take this I'm just, question. I'm just What is Mr. this? Very He well. cannot Lot- read English. very well, Is he supposed to do it? Can you do it? very well. Ask him a question. I'm asking. Ask him a question directly. Mr. Rahman, I put it to you that you have deposed before this honorable court previously that the asset is in custody of your father, and thereafter your father also was present before this honorable court and has given his evidence. Are you aware of that? क्या आपको ये पता है कि आपने बोला था कि आपने गवाही के तौर पर बोला था कि जो एसेट है वो आपके पिताजी के पास है, और पिछली बार आपके पिताजी भी इस कोर्ट में गवाह के तौर पर यहाँ हाजिर हुए थे। क्या आपको याद है? हाँ, याद है। यस, आई रिमेम्बर। But the name he has said, just the name today, a name he has said, Kuber Khan or something. हाँ, यस, कुरेश खान। कुरेश खान। So, Mr. Rahman, can you tell my lord that what prevented you to inform the name of Mr. Quresh Khan to this honorable court on 8th September 2017? आपने 8 सितंबर 2017 को आपने क्यों कुरेश खान का नाम इस कोर्ट में नहीं लिया, या कोर्ट को आपने कुरेश खान के बारे में क्यों नहीं बताया? कौन सी चीज ऐसी थी जो आपको रोक रही थी कुरेश खान का नाम बताने से? My lord, कुरेश खान का नाम मैं बताया था। His father is present in court, so let him leave the court. Let him leave, go outside the Where court. is he? आप बाहर रहिए थोड़ा, आपको बुला लिया जाएगा। Because there is a provision in CPC, that's why he was called and he was also given. But Yes, it may not ask require. Yes. Yes. I had mentioned the name of Quresh Khan on that date. Please point out in which answer you have mentioned the name of Mr. Quresh Khan. आपको याद है कि आप कब उस दिन जब आए थे तब कब आपने कुरेश खान का नाम लिया था आपके जो गवाही पे? कुरेश खान का नाम लिया था। Which answer? देखे निश्चित नाम पूछता। He cannot read English. Yes, no, this question cannot be permitted. Very well. I'll record this. একটা ব্র্যাকেটে কোট বলে। Learned counsel for the award holder puts a question to the witness to the effect whether he can show the court the exact question, comma, in answer to which he had replied by giving the name of Quresh Khan. Full stop. Next para. However, comma, the said question is not permitted by the court in view of the disability of the petitioner in deciphering English. Very Full stop. The deposition on the previous occasion was recorded in English. Second bracket. Ending this. Square bracket. 2 or 3 questions. So I cannot permit this question. Yes. I suggest to you your story of handing over the asset to your father, as you have narrated before this honorable court previously, and now handed over to Mr. Quresh Khan, as you have deposed before this honorable court today, is false. वकील साहब कह रहे हैं आपका जो कहानी है, जो आप बोल रहे हैं अभी इस कोर्ट में खड़े होकर, कि पहले जो एसेट था वो आपने आपके पिताजी को दिया, फिर आपके पिताजी ने उसको कुरेश खान को दिया, ये बनाया हुआ है, गलत है। नहीं, ये सच है। No, मेरे पिताजी और कुरैश खान। I do not agree. This is a true fact because my father, मेरे पिताजी और कुरेश खान, बोली, दोनों मिल करके ये काम करते थे। they both क्या काम करते थे? वो गाड़ी का देखभाल करते थे। They both used to look after the vehicle together. Is giving another suggestion.
I further suggest to you that by giving different answers before this honorable court on different dates, you have intentionally misled this honorable court. आपने जानबूझ के इस कोर्ट को आप गुमराह कर रहे हैं, अलग अलग डेट पर अलग अलग आंसर देके। नहीं, जो सच है वो मैं कह रहा हूँ। I do not agree. Whatever I am telling now is the truth. Can I, my lord, just show him his affidavit of asset affirmed on 16th November 2016? Ask him the question. I'm Do you refer to the? Very good. Put it in your question so that it Very goes down. Very good. I will just, Mr. Rahman, I'm in your affidavit of assets affirmed on 16th November 2016. Okay, though. Interpret it. You have mentioned about a bank account, savings bank account in State Bank of India, account number. दिए दो number टेक्न लिखा है. He has it. My copy has been. Can you produce the account statement from 2016 till today? आपने before this honorable court. Yes. आपने आपका जो संपत्ति का हलफनामा है जो आप 16 नवंबर 2016 को दिए थे, उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है उसका अकाउंट स्टेटमेंट 2016 से अब तक आप जमा कर सकते हैं कोर्ट के सामने। हाँ, दे सकते में। यस, आई कैन प्रोड्यूस। प्लीज Mr. Rahman, last answer. Previously, you have deposed before this honorable court that you will try to pay off the dues of the award holder, but you require some time. What is your stand with regard to payment to be made to the award holder as on today? आपने पहले इस कोर्ट में गवाही के तौर पर आपने बोला था कि आप टाटा मोटर्स फाइनेंस से जो पैसा उनको मिलेगा आपके तरफ से वो आप उनको चुका देंगे। तो अभी के दिन में खड़े होके आपका क्या कहना है कि आप कैसे वो लोन को चुकाएंगे? मैंने गाड़ी लिया था, वो जो मेरे फादर लिए थे, वो लॉस हो गया। हम देने लायक बिल्कुल नहीं है, पर बिल्कुल डिफॉल्टर हो गए हम। The vehicle we had purchased, after purchase we are not in a position to repay the loan. We have become a defaulter. उसके बाद बोलिए। अभी मैं काम करता हूँ डेली का 300-400 रुपए में। Now I work as a daily wage laborer and I receive an amount of rupees 300 to 400 per day. Last question, my lord. I will put on another suggestion, and if he can produce the document. Yes, don't need not explain. Continue with your. I'm suggesting to you that you have, upon taking the loan with conspiracy of your father, you have successfully dealt with the asset, which is the only security of the award holder. आपने आपके पिताजी के आपने लोन के तौर पर जो लिया था उससे आपने जो खरीदना था वो खरीद लिए और आपने आपके पिताजी से मिलकर एक साजिश किए हैं। नहीं, मैंने कोई साजिश नहीं किया है। हमने काम करने के लिए ये किया था मगर फेल हो गए। नो, वी हैव नॉट डन एनी कॉन्स्पिरेसी। वी हैड। आपने क्या लिया बोला?
से बोलिए। मैं ये काम आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेस होने के लिए ये काम किया था, मगर फेल हो गया ये। I wanted to do the job successfully, but now I am failed to do the job. I'm further suggesting to you, although you have the security, although you have the asset and have the means to pay, you're not taking any steps to pay off the dues of award holder. वकील साहब कह रहे हैं कि आपका जो लोन रिपेमेंट का क्षमता है वो आपके पास है, फिर भी आप जो लोन है उसको शोध नहीं कर रहे हैं। मैं फेलियर हूँ, मेरे पास रहता तो मैं दे देता। I have failed in my job, and if I had the capacity to repay the loan, I would have repaid it. My lord, for today that will be enough. If he produces the document, bank He statement. closes the examination then. No, if he produces the bank statement, upon my lord looking in the bank statement, if I can find anything, I will put some more questions, or that will be all. Hearing of the witness is partially concluded. Full stop. For further examination, comma, let the matter be postponed till September 26, 2024, when the witness shall again be present for being examined further. Full stop. In the meantime, comma, within a week from date, comma, the documents referred to in today's examination shall be handed over. Copies of the document, copies of the documents, Jabulam, shall be handed over to the learned advocate for the award holder by the learned advocate for the award debtor. My lord, I will not examine his father anymore. No, I've asked award debtor. He's award debtor number Number one. তাহলে যেখানে award debtor number 1 witness took award debtor His number father is not a party to the Party to proceeding. this proceeding, my lord. No, no, I'm not recording anything regarding his father. This much, yes. Great. Please hand over within a week those documents. Next. Item number 23, Kotak Mahindra Bank Limited. Lordship, the sheriff has to file a report.